In several earlier sessions, we've spoken of corruption as being the big burning issue in this country. I'm sorry, I'll just take a minute till people settle down a bit. We've spoken of corruption as being the big burning issue in the country. It certainly has occupied media time, national imagination, all of our concern. But subterranean to that are many other issues in this country that often get less media attention, but perhaps are even more germane. Certainly, to many of us, corruption seems the lesser issue when you compare it with the issue of land. Because the issue of land in India and the debate over it, the disagreement over it, to use a word from the earlier session with Manish Tiwari, really is at the heart of the democratic conversation. Over the last 2 days, every time there's been a politician on the stage, it has been unfortunate that the discussion about growth and development, and even when we've had economists on the stage, the discussion about growth and development is unilateral. There is a great sense of urgency, but there is also a sense that they are the custodians of growth, and anybody who asks for that conversation to be molded is in opposition. And repeatedly, not just people like us who in the media are trying to mediate that conversation, but those from the ground who are asking to be heard are repeatedly saying that this debate, this disagreement is not about a unilateral conversation. It is not just about the conversation about growth. It is not just about the grassroots movements that are asking to remain in a socialist past. It is about opening up that conversation. And today, the issue of land is something that I think many of us in this hall perhaps don't even understand. There are millions of people in this country who are now called displacement refugees. They are people that have been forced off their land with absolutely nothing in return. Until barely a few months ago, it was a colonial act that was pushing people off the land. They got no rehabilitation, no resettlement, no consensus, no consultation. The concept is of eminent domain, that the nation owns land, and when it wishes, they can displace you. We might as well be China. But none of us here have felt that pain of displacement. Every time this discussion comes up, my own family, my friends, the fraternity, the class of people I move in are impatient. They say, but this is the march of history. That is how it must happen. And you're impatient with those who are asking to be heard. But the next time one feels impatient, ask yourself, would you move from your Jorbagh house? Would you move from your Nariman Point house? Would I move from my Saket house? If a government official comes knocking at my door and says, you've got to move out because this is for the well-being of the nation, it will enhance our GDP, and you're going to get nothing in return. Your children can no longer go to the same school. You cannot be neighbors. Your community is gone. And I don't really know where you can settle yourself, but you've got to move. Would you do it? In the cities in which we live, we have fights and we slap each other when we can't agree over a parking spot for a car. And here we are impatient with those who are asking to be heard about just being moved from their livelihood and their land through a language of consultation and justice. They are not saying that it should not happen. They're saying, how should it happen? And can we be consulted? What are the terms of conversation? To understand this issue of land, today we have extremely experienced and compassionate speakers, two farmers, Devram Kanhera and Mansa Bhai, who have come all the way from Madhya Pradesh. They're part of the national Narmada Bachao Andolan. They are farmers who have given up a lot of their time to be activists. We have Ulka Mahajan, who's one of the most articulate, dedicated, and Manish spoke earlier about people whose politics haven't changed over many years, and he said there might be a conspiracy behind that. But when you meet Ulka, you'll understand why over 20, 30 years, she has been fighting for the same argument. She's a land activist based in Maharashtra,
And we have Pradeep Prabhu, who's a lawyer, trained from TIS, but who gave up everything that he could have to live in a tribal area, and he speaks for the tribal people. It is because of his presentation, it is because of his resistance, that today we have two of the most progressive legislations in the country. It's a different matter that we don't utilize it, but it's called the PISA and the Forest Dwellers Tribal Act. I've got that wrong. The Forest People's Rights Act. And they will tell us why, even after we legislate, we don't utilize this, and the impacts of that, and why people are asking to be heard. Please welcome them on stage. कल्याणी खरपदारिणी गिरिजा घनश्याम चंडिका छत्रधारिणी गिरिजा जग जननी ज्वालामुखी आदि शक्ति आदि ज्योति I was hungry and you gave me to eat. Hungry not only for bread, hungry for love. It is my bounden duty and I must endure. I also have my colleague Sanjay Dubey, the editor of the Hindi magazine, who will also be speaking to the panelists here today. You know, I've already articulated, Pradeep and Ulka, what the terms of this whole debate is. And before we discuss the abstractions and the legislations, I'd like Sanjay to run us through the experience of people on ground and, you know, why is there so many resistance movements springing up from the soil, and why are people putting their body on the line? अभी मैं देवराम जी से बात कर रहा था बाहर, और मैंने देवराम जी से पूछा कि क्यों ऐसा है कि सरकारें ये समझती हैं कि आप उन्हें काम नहीं करने देते, इंडस्ट्रीज ये समझते हैं कि आप उन्हें उनका भला नहीं करने देते, क्यों ऐसा है कि आप हर तरह की लड़ाई लड़े जा रहे हैं। तो देवराम जी का कहना था कि जिस दिन आप लोग एक बटन कंप्यूटर की दबाएंगे और एक पेड़ उगाएगा, और जिस दिन आप दूसरी बटन दबाएंगे उसमें से सेब तोड़ लेंगे, उस दिन से मैं लड़ाई करना छोड़ दूंगा। तो ये देवराम जी का कहना था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर देवराम जी ही इस बात को बताएं, ये तो चलते फिरते उन्होंने बोल दिया कि देवराम जी क्यों ऐसा सरकारों का मानना है, उद्योगपतियों का मानना है कि वो आपका भला करना चाहते हैं और आप उनको उनका भला, अपना भला नहीं करने दे रहे, और आप उनको कोई भी काम नहीं करने दे रहे जिससे देश का भला हो, देश आगे जाए। ऐसा क्यों है कि आपके बारे में ऐसी धारणा बन रही है? जैसे बताया नर्मदा के पहले, तो सबसे पहले मैं इन आयोजक साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी बात सरकार, उद्योगपति, क्योंकि जो भाई दुबे जी ने कही, तो मैं भी इस राष्ट्र का नागरिक हूँ और राष्ट्र का हित हम लोग भी चाहते हैं। हमको जो राष्ट्र का हित चाहते हैं, राष्ट्र के अन्नदाता है, उसको विकास का विरोधी कहा जाता है। मित्रों, उद्योगपति उद्योग लगाते हैं, राजनेता उनको जमीनें देते हैं, गरीबों को हटाया जाता है। अब बात विकास की आती है तो एक तरफ सड़क, बिजली, इनकी मांग करते हैं इंडिया,
और रोटी, कपड़ा और मकान की मांग करता है भारत। जो बैठे हैं गांव में लोग, मित्रों, विकास किसको कहते हैं? मेरा तो सवाल ये, विकास किस बला का नाम है? हमने देखा है जो किसान, आप यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं, जैसे कि भैया को मैंने बताया, सारे लोग, हमने देखा कि लोहे का हवाई जहाज बनाया, उड़ा दिया, लोहे का बहुत बड़ा जहाज पानी में तैरा दिया। ये सारी सुविधाएं हम देख रहे हैं कि कहाँ दुनिया में एक दूसरे से हम बात कर लेते हैं। ये कोई इन चीज़ों का हम विरोध नहीं करते हैं। सवाल ये है, प्रकृति ने जो दिया है हम सब लोगों को, सबसे पहले हवा, दूसरा पानी और तीसरा खाने के लिए सब लोगों को चाहिए। चाहे आप उसका कैसा भी विकल्प या रूप रहा हो, खाने को जो मिलता है सब लोगों को प्रकृति से मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि कंप्यूटर पर एक बटन दबाएं, एक पौधा लगाएं और दूसरे दिन हमको जो भी फल हो या खाने के लिए जो अनाज हो वो बना दे, तो हम कभी खेती की बात नहीं करेंगे, कभी ऐसी चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे। हम भी विरोध नहीं चाहते हैं। हम तो उल्टा ये कहना चाहते हैं कि सरकारें देखती है कि गरीबों की बात करती है कि ये गरीबी रेखा के नीचे है, ये गरीब है, अमीरों के पास और अमीर होते जाते हैं। हम तो देखते हैं कि टाटा, न बिरला, न अंबानी, न पता नहीं गोदरेज, न जिंदल, न क्या क्या नाम वो इंदौर के पेपर में पढ़ा हमने। इतने सारे लोग, हजारों एकड़ जमीन उनको रातों रात दी जाती है, और हम लोगों को जो पीढ़ियों से पाल रहे हैं, विकास के नाम पर हमारी ज़मीनें जो ली जा रही है, हमको जीने के लिए, स्वयं के लिए तो हम जीते हैं, सारे लोगों को जो लोग खाना देते हैं उनके लिए क्या नहीं चाहिए ज़मीन? लेकिन देवराम जी, उनका ये कहना है कि वो आपको दूसरी जगह बसाते हैं, आपको उसका कंपनसेशन देते हैं, आपको नौकरी भी देते हैं। उन्हीं कंपनियों में जो लगती हैं उनमें आपके बच्चों को नौकरी मिलती है, आपको रहने के लिए दूसरी जगह देते हैं, या आपको उसके लिए कंपनसेशन भी मिलता है। अभी एक लैंड एक्विजिशन बिल भी आ रहा है जिसमें 20 साल तक आपको कुछ मिलेगा। तो क्या ये सब चीज़ें आपके हित में बिल्कुल नहीं हैं, या ये ठीक नहीं है, आपको कुछ और चाहिए? कुछ और वाली तो बात है ही नहीं। हम तो ज़मीन पर जीने वाले, ज़मीन के बदले ज़मीन है। सवाल बात आपने कंपनसेशन की कही। कंपनसेशन जो पैसा जो है, पैसा आपको बताएं, मेरे पास में बड़वानी शहर है, वहाँ 1 स्क्वायर फीट का मिलता है 1200 रुपया। 1 स्क्वायर फीट का 1200 रुपया। और मेरी ज़मीन का दिया जा रहा है 5 एकड़ का 5,58,000 रुपया। वहाँ पर हम 1 एकड़ में, इस साल की बात बताऊँ, हमने हरी मिर्ची 3 रुपये किलो बेची, 3 रुपये किलो। जुलाई से बेचना चालू किया। 1 एकड़ में हमने 1.5 लाख की फसल ली और 1 एकड़ का हमको 1,11,000 रुपये कंपनसेशन दिया जाता है। जो 1 साल की क्रॉप फसल लेते हैं उसको पीढ़ियों तक का ख़त्म किया जाता है। और उस कंपनसेशन से अभी आपने बात करी कि और कई धंधा, तो हर किसान आदमी, मैं तो कहूँगा कि आप सब मित्रों को कोई चलो हल चलाना सीख जाए, कर लेंगे क्या? तो मैं किसान का बेटा जाऊँगा तो मैं और कोई तत्काल कोई रोजगार या धंधा तो कर नहीं सकेंगे। बात रही कि कंपनियों में काम करने का, मित्रों कंपनियों में काम, हमारे पास में अभी कुछ फैक्ट्रियां खुली हुई है काफ़ी समय से, पिछले 10-12 सालों से। उस क्षेत्र के, विस्थापित क्षेत्र के लोग 5% या 10%, इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं, आए हैं बेरोजगार, है ना। वहाँ पर जो आए हैं, कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, न कोई हरियाणा से आया। ऐसे रोजगारी, बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है। विकास के नाम पर हजारों बांध बनाया जा रहा है, लाखों करोड़ों लोगों को उजाड़ा जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम आपका पुनर्वास कर देंगे, कंपनसेशन दे देंगे। पुनर्वास की बात कहें, आपको बताऊं, आज 35 से 40 हज़ार परिवार है, और आप वेबसाइट आप खोल के देखो, तुम्हारे कंप्यूटर पर बताती है सरकारें कितनी झूठी है। बैलेंस से जीरो, सबका पुनर्वास कर दिया, बैलेंस से जीरो। जहां मौजूद है आज 2 लाख परिवार, 2 लाख लोग, उसको कहती है कि बैलेंस से जीरो, है ना। बात उद्योगपतियों की आती है, उद्योगपतियों से मैं ये विनती करूँगा, उनके साथ में जो ये करते हैं, तो हम, मेरा कहना ये है, उद्योग में जो भी
आप उद्योग लगाते हैं, हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, सरकार के पास क्यों जाते हैं? पहले लोग पैदा हुए कि सरकार पैदा हुई? पहले लोग पैदा हुए, सरकारें बाद में पैदा हुई। तो लोगों के पास जाए, लोगों को हम देंगे उद्योग लगाने के लिए जमीन, उसमें से जो शुद्ध लाभ आपको मिलेगा उसमें से, जैसा कि हम खेती को बटाई पर देते हैं, तो टाटा जी के पास जितनी ज़मीन है उन्होंने कितने की ज़मीन ली है, कितनों को जड़ा है, तो उनकी पीढ़ियों को पालने के लिए से उसमें से और बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा कम बढ़ेंगे, तो उनकी पीढ़ियों को पाले तो कोई भूखा भी नहीं रहेगा, कि कोई उजड़ेगा भी नहीं और कोई भूमिहीन भी नहीं होगा। तो भूमि जो बहुत महत्व रखती है, प्रकृति जो धरती माता जो बनाना थी बना दी है, कोई रबड़ तो है नहीं तो खींच लेंगे, कंप्यूटर पे धरती बना नहीं देंगे, है ना। ये समस्याएं क्यों आती जा रही? पानी की समस्या हम तो देखते हैं, ये पानी बाटल में बिकने लग गया। हम मेरी भैंस का दूध 20 रुपये किलो जाता है, 20 रुपये में बाटल मिल रही है, कितने शर्म की बात है ना। और यहाँ भी 50 रुपये की चाय, मैं बाहर पूछ देखा 50 रुपये की चाय। आप सैकड़ों हजारों लोग आए, आपको किसान कभी कोई कीमत नहीं लगाता है। आपको बताऊं, ये इसको आप चकाचौंध को कह रहे हैं कि विकास। मैं इस होटल का इनका मैं विरोधी नहीं हूं, मैंने यहाँ घूमकर देखा, मेरे क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र जो है 358 गांव है, कुक्सी एक गांव को छोड़ दें, इसी एक होटल में 358 गांव की बिजली एक जगह जल रही है, इसको बोल रहे हैं विकास। कहां है विकास? किस बला? वो विकास नाम की बला दिखाओ यारों, यो विकास नाम की बला तो दिखाओ, कहां पर है विकास नाम की बला? मैं तो अशिक्षित हूं, किसान हूं, ग्रामीण हूं, है ना। विकास नाम के बला कोई बताए तो हम क्यों करेंगे विरोध? कहाँ है विकास? मनसा दादा, हम लोग काफ़ी समय से ये सुन रहे हैं कि खेती अब फायदे का सौदा नहीं रहा है ना, खेती में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत कर्जा रहता है, इसके बाद भी आप लोग अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ज़मीन की कीमत आपके लिए क्या है? ज़मीन क्या है आपके लिए? आप मुझे बस, हम सबको मुझे लगता है ये बताएं, क्योंकि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम ज़मीन को ऐसे समझते हैं जैसे ये बॉटल है या ये है या हम खरीद लेंगे, तो आपके लिए ज़मीन क्या है? सबको राम राम भारत की तरफ से। साथियों, मैं किसान हूँ, मेरी माँ का क्या मोल हो सकता है? जमीन मेरी माँ है, जमीन मेरी जीविका का साधन है, और जो प्रकृति ने मुझे दिया है। आप अभी मेरा भाई कह रहा था विकास इंडिया का हुआ है, भारत का कहाँ विकास हुआ है? भारत गांव में बसा है, आज भी शिक्षा का अभाव है। ये तो तहलका की टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कलम के माध्यम से, नहीं तो किसान आज जो हमारे यहाँ, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, सबसे ज्यादा फर्जी रजिस्ट्रियां हुई है किसानों की, सरकार के माध्यम से हुई है, जांच कर रही हाई कोर्ट में। तो उस कोर्ट को भी धन्यवाद दूंगा कि जिसने हमने कहा कि हमारे क्षेत्र में आप कह रहे हो पैसा मेरे लिए कागज का एक टुकड़ा है, जमीन मेरी जीविका का साधन है, पीढ़ियों से हम पल रहे हैं। किसान हूं मैं हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया, दुनिया में ही अगर कहीं ना कहीं स्वाभिमानी धंधा है तो वो किसानी का है, और किसानी पूरी ईमानदारी से जीविका का एक साधन है। आज देखिए, अगर जमीन नहीं है तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। सरकार ने हमारे यहाँ कहा, सुप्रीम कोर्ट, हम कोर्ट तक गए, कोर्ट ने कहा निश्चित किसान को जमीन मिलना चाहिए, जमीन उसकी जीविका का साधन है। कोर्ट ने तो कहा, सरकार बीच में अड़ंगा लगा रही। सरकार ने दलालों के माध्यम से 5 एकड़ जमीन 5,58,000 में दी। मेरे क्षेत्र में आदिवासी है, आदिवासियों को 10-10 की गड्डी दी, अब 58,000 में एक थैली भरेगी। जा राम सिंह भाई, जा छगन भाई, 5 लाख दलाल ने लिए, 58,000 में ही उसकी 5 एकड़ मिली और फर्जी रजिस्ट्री हुई।
पूरे हिंदुस्तान में उसको आपने भी कलम के माध्यम से, मीडिया ने भी, और आज झा आयोग जांच कर रहा है बैठकर। सर आप जी मुझे बताएं कि देखिए विकास भी चाहिए, हाँ। फैक्ट्री भी चाहिए, सड़कें भी हाँ, चाहिए, स्कूल भी चाहिए, हाँ। कॉलेज भी चाहिए। तो अगर बिल्कुल जमीन नहीं लेंगे या बिल्कुल तो फिर कैसे काम चलेगा? मतलब कौन सी बीच की गुंजाइश ऐसे हो, क्या तरीका हो जिससे आपको भी परेशानी ना हो, इंडस्ट्रियलिस्ट का भी काम हो जाए, जो शहर में लोग रह रहे हैं उनकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी, उनकी भी ज़रूरतें, कहीं कुछ बीच का रास्ता ऐसा निकले, तो वो आप मुझे बताओ। मैं ये कहूँ कि सरकारी जमीनें हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पड़ी है और उस पर कोई भी फैक्ट्री लगाए, हम स्वागत करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। फैक्ट्री सरकारी जगह में लगेगी। आज तो ये स्थिति है कि मैं जहाँ बैठा हूँ नर्मदा पर, लेकिन रेलवे स्टेशन आपके घर के पास बनेगा या स्कूल आपके घर के पास बनेगा तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। आप कहाँ, मान लीजिए सरकारी ज़मीन बहुत दूर पड़ी हुई है तो कैसे काम चलेगा? देखिए मैं ये कहूँ कि हम आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 10,000 करोड़ लोग घर बेघर बाहर हो गए। विस्थापन का मुद्दा किसी देवता की मूर्ति को इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में आप कर सकते हो, ये जीता जागता इंसान को कैसे कर सकते हो? आप मुझे ये तो समझाएं। इस दृष्टि से कि मैं चाहूं विकास हो, विकास के हम विरोधी बिल्कुल नहीं है, हम चाहते हैं विकास हो, पर किसके बल पर किसका विकास होना चाहिए। ये बिजली आज मेरे यहाँ मध्य प्रदेश की मैं गवाह दूं, मेरे यहाँ महेश्वर परियोजना बनकर तैयार है, एस कुमार ने बना दी है। इसी अगले महीने में उसका उन्होंने मतलब रेट तय किया, 9 रुपए यूनिट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नर्मदा पे जितनी भी परियोजनाएं बन रही हैं बहुत सारी लगातार बनती जा रही हैं, और देवराम जी से मैंने पूछा कि उसके लिए पानी उपलब्ध है, तो सतपुड़ा के जंगल हैं उसमें पानी बरसता है, पानी इकट्ठा होता है और धीरे धीरे वो माँ की तरह वहाँ से हम पानी लेते रहते हैं। तो देवराम जी का कहना था कि नहीं, वो जंगल तो मेरे सर की तरह होते जा रहे हैं, तो जब जंगल ही नहीं रहेंगे सतपुड़ा के तो वहाँ से पानी कहाँ मिलेगा, और जब पानी नहीं मिलेगा तो वहाँ की परियोजनाएं। आपको लगता है कि वहाँ जितने ये सब डैम वगैरह बन रहे हैं उनके लिए पानी उपलब्ध है? ये सब तो आज देखते हैं पानी उपलब्ध। मैं तो किसान आदमी हूँ, ये तकनीकी जो विकास नाम की सोच रखने वाले अर्थशास्त्री, न बुद्धिजीवी, न पता नहीं कौन कौन से, नर्मदा पर 30 बड़े बांध, 135 मझोले बांध और 3000 छोटे बांध बनाए जा रहे हैं, है ना। जंगल, ये फैशन और फैसिलिटी के नाम पर जंगल मैं देख रहा हूँ, पिछले 85 से 90 से 85 से चालू हुआ तो मेरा सर है वैसा वैसा पूरे पहाड़ हो गए। सातपुड़ा और विंध्याचल पूरा का पूरा, वो नर्मदा के बाजू की जो नदियाँ जितनी हैं, 999 नदियाँ हैं, सारी नदियों को मैंने स्वयं ने, मेरी आज 60वां साल उम्र चालू है, 40 साल पहले हम देखते थे, 35 साल पहले देखते थे, सारी नदियाँ मतलब मई जून में भी बहती थी। आज आप चलें जो नदियाँ मई जून में बहती थी वो नदियाँ आज नवंबर में खलास, सूखी सनसनाहट है। और पानी जितना प्रकृति से ये होता है, हमने प्रकृति से लिया है, प्रकृति को जो वास्तविक देने का काम जो है वो आज तक कोई सोचता नहीं है। उदाहरण के लिए बताऊं, मतलब सारा ये बताते हैं आज सिर्फ लूट, कोई से भी दल की राजनीति हो, चाहे फूल वाला हो, पंजाब वाला हो, हाथी वाला, साइकिल वाला, सभी मतलब वो पूंजीपति और उद्योगपति विकास का ढिंडोरा पीटते हैं। हम देखते हैं, है नहीं, कि सिर्फ लूट के सिवाय कहाँ आप देखते हैं कि वो गडकरी भी गया, वो फलाना भी गया, वडेरा भी आ गया ना, चारा घोटाला, यूरिया घोटाला, बोफोर्स घोटाला, पता नहीं घोटाले करते। पर हमारा कहना ये है, इससे काम नहीं चलेगा। अगर वास्तव में नदियों का पानी जो है वहाँ आपको, इसीलिए FDI का विरोध करते थे शिवराज सिंह जी, और बाद में इंदौर में सब देश के विदेश के जितने लोग हैं पूंजीपति लोग, सबको बुलाया, आओ कमाओ और ले जाओ, लूटो न ले जाओ। तो इसलिए, और फिर बाद में उसके बाद में छत्तीसगढ़ में एक तरफ भारत बंद FDI के बदले, ना दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आओ, तो ये जो चेहरे जो हैं पार्टियों के, है ना, ये सिर्फ इनका ये करते हैं। तो नदियाँ आज
बचा नहीं पानी। जितना पानी, हम उदाहरण बताऊँ ना मैं आपको, ओंकारेश्वर परियोजना बन चुकी है, कंप्लीट हो गई है, जिसमें जल सत्याग्रह किया था लोगों ने, 15-17 दिन तक पानी में बैठे हुए थे, उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। वो कह रहे थे कि हमको ज़मीन के बदले ज़मीन दे दो, रहने के लिए, मकान बनाने के लिए ज़मीन दे दो, जिनको दिया नहीं। जल सत्याग्रह, जान को हथियार बनाकर, अहिंसक तरीके से लोगों को जान हथियार बनाकर वहाँ पर बैठना पड़ा, 17 दिन तक बैठे। जब अंधी गूंगी बहरी सरकारें कुछ आई और आश्वासन दिया, और वहाँ पर भाजपा के विजय वर्गीय, कांग्रेस के अरुण यादव फुटबॉल की तरह खेलते रहे, पर आश्वासन के सिवा घोषणावीरों ने कभी कुछ करते नहीं है, कहीं के भी राजनीतिक दल है। तो आज पानी की कमी है, और वहाँ पर सब उद्योगपतियों को बुला लिया है। तो पानी उद्योगपतियों को देंगे, बिजली उद्योगपतियों को देंगे। हमको कहा था कि महेश्वर पूरा हो जाएगा, इंदिरा सागर पूरा हो जाएगा, 24 घंटे बिजली देंगे। आज भी आप चलिए, मात्र हमको 8 घंटे मुश्किल से, और उसमें कब आएगी कब चली जाएगी कोई गारंटी नहीं। 8 घंटे देते हैं, उसके बाद में बिजली का ठिकाना नहीं, कब आएगी नहीं। बिजली अगर नहीं होगी तो बिजली तो हमको खाना नहीं है, बिजली हम तो नहीं खाने वाली, बिजली खाने वाले लोग उद्योगपति है नहीं, पूंजीपति, उनको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फलाना चाहिए। हम तो प्रकृति में घूमे तो हम क्या करेंगे एसी को, क्या करें कूलर को, तो हमको बिजली चाहिए सीमित, वो भी सीमित। मैंने कहा नहीं कि ये पूरे होटल का मेरे 358 गाँव पूरा इतनी चाहिए। विकास होना चाहिए, विकास की विरोधी नहीं है, कारखाने भी खुलना चाहिए, पर कारखाने में कैसी भागीदारी हो, किनको किस प्रकार से मिले, ये सब इतने बड़े बुद्धिजीवी लोग, सोचने वाले लोग, मुझे लगता है कि हम तो यहाँ 2 दिखाई देते हैं, शायद एक आध झारखंड की बहन दिखी थी, बाकी तो आप सारे पढ़े लिखे बहुत बुद्धिजीवी लोग। तो हो सकता है हमारी सोच में कमी, पर ये हम देख रहे हैं, भोग रहे हैं खुद, इसलिए ये हमको कहना पड़ रहा है। आपको उदाहरण सरदार सरोवर के देखें, डूब में हम 3 लाख लोग हैं, है ना, और पुनर्वास नीति सबसे नंबर 1 की, जिसको बोलते हैं नंबर 1 सरदार सरोवर पे। तो आप तो टीवी पर देखते हैं तो हाँ यार अच्छा पुनर्वास है, पेपर में पढ़ते हैं तो अच्छा पुनर्वास है, सरकार वाले कहते थे ये तो विकास के विरोधी है, क्यों नहीं लेते पुनर्वास। पर वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि बोलते कुछ है और करते कुछ है। आज तक भी गुजरात के 19 गाँव के लोग, हमने कहा कि चलो इनको बसने दो, जाने दो। गुजरात का पहला गांव वड़गांव, एक गांव को उन्होंने 36 जगह बिखेरा, दूसरा गदेर गांव, उसको एक गांव को 42 जगह बिखेरा, और गुजरात के 19 गांव के लोगों को 177 जगह बिखेर दिया। तो बाकी तो महाराष्ट्र के 33 गांव, एमपी के 193 गांव, तो हमारा तो और बिखरना चालू रहेगा। हम तो गांधी सागर हमारा देख रहे हैं, नेहरू जी ने 1960 में बनाया, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैरेज। आज तक 60 साल में, 50 साल में, 52 साल में वो बांध 4 बार भरा, खाली 4 बार। सरकारी रिकॉर्ड बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, है नहीं। उसका जितना बिजली देने का बोला था वो कभी मिला नहीं। हम तो ओंकारेश्वर को पास में देखते, 520 मेगावाट बिजली देखी। आज चलो देखो कितने टर्बाइन चलती, 2 खाली, कितनी बनाती है बिजली, 130 मेगावाट। घोषणा करी 520 मेगावाट, बिजली दे रहे 130 मेगावाट। तो ऐसी झूठी घोषणा है, झूठा वो कि लाभ, तो लाभ को ये जरूर दिखाते हैं, पर हानि क्या क्या होगी ये मैं बहुत बता सकता हूँ इसको, है ना। सरदार सरोवर की कहानी में हानि क्या होगी कभी घोषणावीरों ने कभी बताया नहीं। कागज पर लाभ बताते हैं, ये लाभ मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, पर साथ में जो हानि होती है उसको भी बताना चाहिए और उसकी तुलना करना चाहिए, लाभ ज़्यादा है कि हानि ज़्यादा है, तो ही उस परियोजनाओं को उसको बढ़ाना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल कभी नहीं बढ़ाना चाहिए। Devram bhai, I just wanted to reiterate, this issue about energy is coming up again and again. And I just want to remind you of one statistic which nobody argues with, which is that the existing energy that we have in this country, 40% of that is lost in transmission. Why, if we just start to fix that, a lot of the troubles will be sorted. And the other is about distributive justice. We talk about water. Both of them have spoken about water. We do have to understand, and actually the developed cities across the world have a finite amount of water that urbanites can use. How fair is it that we should have, showers running down
and 3/4 of the country should be cut off from their water sources. These are uncomfortable conversations to have, but they do require us to introspect. Pradeep, I wanted to ask you, Sanjay posed some of the questions that the other side of the Berlin Wall asks, and I wanted to ask you, I once did an interview with Mr. Chidambaram about the tribal issue, and he said, what do you want? Do you want them to remain as hunter-gatherers? There is a great sense that this is an unviable, outmoded way of life. Why are you fighting for tribal rights? What is the value of that way of life? And should they be brought into modernity? See, you have raised 3 issues. First is your definition of modernity, the definition of modernity is a big question. If a society which is constructed around harmony is destroyed by a society that is based on disharmony, is that modernity? It's a question you need to ask. If ecological communities living ecological lives are defined as poor on the basis of your development standard of consumption, do you need to destroy ecological communities? These are all questions that remain unanswered. See, the issue of land is very critical for example, that if one looks at the map, I still remember once when we were discussing and Sunita Narayan was explaining to the committee and said, if you take 4 maps, you take a map of the tribal areas, you take a map of the rich forest areas, you take a map of the rich mining areas, and you take a map where the tigers live, you'll find all the 4 maps are more or less the same. Okay? And so in that question, this whole race for development, these temples of modern India, do we know, has anybody asked the question that the Rourkela steel plant, the people who are displaced by the Rourkela steel plant were paid a compensation of 1 rupee per gunta, and there are 40 guntas in an acre, all right? And many of them said, we will not accept this. Till today, they have not been compensated. Can you believe that Rourkela steel plant acquired to 3,000 acres of land, used only 400 or 500, and the government of Orissa sold one part of it at the rate of 15,000 a square meter? And the people of Rourkela have to see what happens. So, these questions of modernity are very, very confusing. I find it tremendously difficult to accept that one single community, that is the tribal community, 20 million of their members have been displaced, and we have lost track where they are. The people who are displaced by the Hirakud Dam till today have not been settled. 20 million. We today are asking a question, and Chidambaram is talking about the choices. Why don't communities have the right of choice to their definition of modernity? A society which does not know rape is far superior to your society, where a girl cannot walk freely on the street. Okay? When I went to do my research in the tribal areas, I found people had no doors. And I asked, you have no doors? Yeah, because there's no theft. What do you want? And I just try and think when going to my parents' home at 10 o'clock, my mother will say, have you locked the door? Have you bolted it? Have you shut the windows? Have you done this? Have you done that? You get me? And here you have people who live without doors. Now, which is the superior society, you must try and understand. And like what our struggle today is to try and redefine development. That we want to say, we are not talking of development based on consumption. We are not talking of development based on GDP. We are talking about emancipation. We are talking of advancement based on equity of opportunity. Now, this is what the tribal people are saying. And this is what they are asking in their own terms. And
perhaps the audience here will know that more than half of tribal India is today under the influence of the Maoists. And the single most important reason why the Maoists have been able to consolidate themselves in the tribal areas is because the state has significantly, and when I make the state, I don't talk only of government, I'm talking of also the ruling elites, have significantly failed to restore people back their lands. Lands which have been taken away illegally. And so therefore we have a situation where state lawlessness is being met by the lawlessness of a counter-state. And we are arguing as people working with communities, can we not have state lawlessness addressed by the lawlessness of a citizenship? A whole lawful citizenry that stands up, and that's why I'm here also. If we can really build up, and if the Tehelka can revive a process where you have lawless state being addressed by law-abiding citizens who say, we will abide by the law. In such circumstances, then perhaps we'll be able to handle this. I just went to Panna. Panna is a place in Madhya Pradesh 5 years ago. There were 26 villages which were there. And of course, societies who don't value diamonds and emeralds like you do, children used to play with diamonds and emeralds in their catapults, till one of these prospecting companies found that treasure trove. 26 villages don't exist. Do we have a situation where that whole North Chhattisgarh region, in the past 3 or 4 years, we have no count of it, but by a stretch of imagination, I would say 1,000 young tribal youth have been killed by the state, only to sign 107 MOUs to mine coal in an area which, if you mine all the coal, there will be no more North Chhattisgarh. Now, in all these questions, we are debating these issues and debating the very definition of development. Pradeep, I'm sorry, Yeah, I'll have to please go cut you in. I just want to bring Ulka into this. Ulka, 2 questions. We've heard at least a dipstick of the issues involved. I wanted you to address what has been achieved. We've been talking about the Land Acquisition Act and bringing it up to date. Jairam Ramesh has been consulting with activists, and the legislation is now, being passed by cabinet. What do you think it has achieved? What do you think still remains to be achieved? And if you could just address one other question, which came up earlier, that we do want education, health, all the indices of a civilized life for Bharat as well. And it is true that industrial wealth is also what goes into funding welfare schemes and money. So where can we find the middle ground? So an assessment of the legislation and this issue of the welfare state funded by... Let us discuss the first issue of Land Acquisition Act, which is being redrafted and which was sent to Standing Committee. Standing Committee has given several recommendations. Standing Committee is a mini parliament which works extensively on any piece of legislation. And after working, they have given several recommendations. Keeping all those recommendations aside, another empowered group of ministers is being set up. It comes up with another draft. That draft is again sent to the cabinet, again being rediscussed. And then Congress party chief gives another directions. Again it is discussed. What is happening? What is the premise on which understanding of land is based in Land Acquisition Act? They are looking at land only as a commodity. These 2 brothers, Devram Bhai and Mankaram Bhai, have beautifully explained what land means to them. Land is not only a source of livelihood for farmers and several other communities which are dependent on agriculture, but the land is natural resource and a national resource. Are we not going to look at the other objective which is associated with our real development, which is of food security?
How much of land are we going to acquire? Let me give you recent figures for SEZs, for special economic zones, across 20 states, 2 lakh hectares of land is being acquired. There is another giant scheme which is coming up, which is called Delhi-Mumbai Industrial Corridor. The area of impact, area that is going to be affected is 4,36,486 square kilometers only in one corridor. There is Delhi-Kolkata corridor, which is 3,86,000 square kilometers. And there is third corridor, which is coming up in southern states, which is committed for petrochemical regions. So now they are not talking about land for educational institution or land for one road or one hospital, etc. This is the biggest land grab. Huge tracts of land are going to be acquired, where irrigated lands are going to be acquired, multi-crop lands are going to be acquired. What are you going to eat? As Devram Bhai rightly said, that can you press a button in computer and get grains that you want? How are we going to achieve our target of food security? Today we are 66th in the list of 88 countries who are hungry countries. We have not been able to meet those objectives, then how can we afford to divert agricultural land from agriculture to non-agriculture? And this whole perspective is completely missing in Land Acquisition Act. And therefore, we are opposing it. And Standing Committee had taken serious note of all these submissions which were submitted by several groups, farmers groups, workers groups, etc. And they have given strong recommendations. Now, Standing Committee is composed of members across all the parties. There were NCP members, Congress members, BJP members, etc. Once Standing Committee has devoted its time to a particular task and they come up with recommendations, why can't we accept that? Is it not democracy? And then empowered group of ministers comes and sets aside all the recommendations. That is undemocratic. So what we are fighting for is not only to save agriculture and land in this country, it is coming with a package. Look at SEZ Act, look at Delhi-Mumbai Industrial Corridor, where all local self-government institutions would be dissolved, and special purpose vehicle on which corporate members and only bureaucrats are going to rule. There is no space for democratic institutions. We have given power to local self-government institutions by making special constitutional amendments. We have now started playing with our constitution also. So we are not only fighting to protect our lands and nature and environment, but we are fighting to protect our democracy, to protect our constitution. And that is the real fight. And all these aspects are not known to common people. The industries and corporates, we are not against industrialization, but what they are coming up with is not industrialization at all, because let me give you another figure. 4th All India Census of MSME, micro, small and medium scale enterprises, gives data that in last 7 years, 4.8 million small and medium scale industries have been killed. They've been shut down. What is the industrialization that you're talking about? When you are killing agriculture, when you are killing small-scale and medium-scale industries, and corporates taking over and ruling this entire country by bringing special purpose vehicles, by grabbing land and natural resources, by changing the legislations in this country, is this democracy? And is this development? We have to base our definition of development on some premises. And according to all of us, that premise has to be of eternal human values and human civilization. Let me ask you a question. Are we progressing as a human civilization today? If not, then we cannot call it development. And therefore, we have to fight. Ulka has been very ill, and I still insisted she come. I'm feeling terrible that this conversation has to be cut so short. If it has opened even a sliver of a window in anyone's mind, it would have been worth it. I wish this conversation could go on longer, but thank you very much, all of you, for coming this far and speaking for such a short while. Thank you very much.